अवर्तमान भी जनजीवन को भी आच्छन्न कर रखिथिबा एवं सूक्ष्म सत्तार विद्यमान रहिथिबा एवं आत्मा आमे करुछु बरन अतिथि को आमे कृतज्ञता अर्पण करिबु। प्रारंभ रे हम करिबु हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मृति कमिटीर बरन अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल चंद्र खड़े महोदय को महामान्य राज्यपाल महोदय को अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ दे आज भव्य समावेश स्वागत जनाइबा साधारण संपादक डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सीपात्र को अनुरोध करिबु। आज मुख्य वक्ता माननीय श्याम शरण जी को वरिष्ठ सचिव एवं वरिष्ठ सभ्य रवि नागन को अनुरोध करिबु। आज सम्मान्य अतिथि डॉक्टर संजीव चंद्र महोदय को मंच से संबंधित करने अनुरूप भाव में अंगवस्त्र प्रस्तुत स्मृति कमिटीर अन्यतम सम्माननीय सभ्य रंजन को आज अध्यक्ष माननीय श्री प्रफुल्ल चंद्र खड़े महोदय को अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ प्रदान करते हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मृति विशेष भाव में आपणे एक सामाजिक प्रतिबद्धतार प्रकाश कर आसुंच माननीय डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सीपात्र साधारण संपादिका स्मृति कमिटी निवेदन स्वागत भाषण उपस्थापन करबा। स्वर्गत हरिश्चंद्र बक्सीपात्र नवेतम जयंती हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मृति कमिटी तरफ आयोजित कर समारोह सभापति पूर्व श्री प्रफुल्ल चंद्र खड़े महोदय, मुख्य अतिथि ओडिशा नवनिर्वाचित राज्यपाल सम्मानास्पद श्री रघुवर दास महोदय, मुख्य वक्ता पूर्व वैदेशिक सचिव तथा कूटनीतिज्ञ श्री श्याम शरण महोदय, सम्मानित अतिथि पूर्वतन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं निर्वाचन कमिश्नर श्री संजीव चंद्र महोदय, एठारे उपस्थित समस्त सज्जन मंडली तथा सामाजिक गणमाध्यम संयोजित समस्त सज्जन एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि, आज संध्या मुख्य अतिथि ओडिशा माननीय राज्यपाल श्री रघुवर दास 1955 मसीह जामशेदपुर में जन्मग्रहण कर बाल्य शिक्षा और आईन शिक्षा से ही समाप्त करते। छात्रावस्था महोदय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन में शामिल हुई जरूरकालीन समय में कारागरण करते 1977 मसीह जनता पार्टी में जोगदे विधिवत राजनैतिक यात्रा आरंभ करते। 1995 मसीह से पूर्व जामशेदपुर बिहार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विधायक रूप निर्वाचित हुई परवर्ती समय पर्यायक्रमे से राज्य सभापति अन्य सांगठनिक दायित्व दक्षता सहित तुलाई। 2005 मसीह नगर उन्नयन 2009-10 से राज्य उपमुख्यमंत्री एवं 2014 मसीह झारखंड राज्यर प्रथम अण आदिवासी मुख्यमंत्री भाव से दायित्व ग्रहण कर जनसाधारण विभिन्न समस्या सहित जड़ित जन संवेदनशील व्यक्ति को राज्यपाल भाव पाई आज ओडिशा गर्वित। Sir, on behalf of Harishchandra Bakshipatra Smriti Committee, I warmly welcome you to this event. हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मारकी वक्तृता प्रदान करने आम घर आज भारतर जनाशुना वक्ता विशिष्ट कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वतन वैदेशिक सचिव श्रीयुक्त श्याम शरण महोदय। श्रीयुक्त शरण 1970 मसीह भारतीय वैदेशिक म्यांमार इंडोनेशिया मॉरिशस राष्ट्रदूत भाव एवं परवर्ती समय भारतर वैदेशिक सचिव रूपे दायित्व ग्रहण करते। समय सीमा समस्या भारत चीन मिलित कार्यकारी गोष्ठी प्रतिनिधि भाव एवं भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बुझामणार निजर मूल्यवान मत दे सर्वजनादृत होते। प्रधानमंत्री स्वतंत्र परमाणु संबंधी विषय एवं परिवेश परिवर्तन परामर्शदाता भाव से दायित्व नहीं। श्रीयुक्त शरण सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च
वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम परामर्शदाता ग्लोबल पैनल फाउंडेशन वरिष्ठ सभ्य रूपे कार्य कर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड रिसर्च एंड इनफॉरमेशन सेंटर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज चेयरमैन भाव में निजर दायित्व दक्षतार सहित तुलाई। भारतीय वैदेशिक गणमाध्यम श्रीयुक्त शरण जनाशुना चेहरा विभिन्न जातीय स्तर संवादपत्र और पत्र पत्रिकार बहु आलेख्य प्रकाश पाई आसुछि। प्रशासनिक सेवा उल्लेखनीय कार्य 2011 मसीह से पद्म भूषण उपाधि भूषित होते। 2019 मसीह जापान सम्राट इंडो संपर्क में दृढ़ीकरण में अवदान स्वीकार कर राष्ट्र स्प्रिंग ऑर्डर गोल्ड एंड सिल्वर स्टार भूषण में भूषित करते। एभली जड़े सम्मान्य व्यक्ति को आज मुख्य वक्ता रूपे पाई स्मृति कमिटी गौरवान्वित मन कर। Sir, on behalf of Harishchandra Bakshipatra Smriti Committee, I warmly welcome you to this event. पूर्वतन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं राज्य निर्वाचन श्रीयुक्त संजीव चंद्र होता महोदय सम्मानित अतिथि भाव में आज आम गहन अच्छी। रेवेन्सा विश्वविद्यालय अर्थनीति स्नातकोत्तर शिक्षा समाप्त पर विलियम्स कॉलेज मासाचुसेट्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा लाभ करते। भारतीय प्रशासनिक सेवा जोगदे प्रथम अभिभक्त बालेश्वर और कोरापुटर जिलापाल भाव में कार्य कर से वाणिज्य कर और परिवहन कमिश्नर खनि निगम अध्यक्ष गृह राजस्व उच्च शिक्षा और कृषि विभाग सचिव ओडिशा रेवेन्यू बोर्ड मेंबर भाव में दक्षता सहित कार्य निर्वाह कर। श्री होता कार्य अवसर नेबापर ओडिशा राज्य निर्वाचन आयोग भाव में अवस्थापित होते। 2006 मसीह निर्वाचन मंडल सीमा पुनर्निर्धारण कमिटीर से जड़े सभ्य एवं बहु गुरुत्वपूर्ण कमिटीर चेयरमैन भाव में से दायित्व नहीं जड़े प्राबंधिक लेखक और गवेषक भाव में से ओडिशा रे परिचित। कोरापुटर आदिवासी बहु पुस्तक रचना कर अधुना से ऐतिह्य और संस्कृति से गवेषणा जन विशिष्ट राजनेता भाव में सुपरिचित। उत्कल विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर और परवर्ती समय मधुसूदन आईन महाविद्यालय से आईनगत शिक्षा समाप्त करते। छात्र जीवन वामपंथी चिंताधारा राजनीति आरंभ करी से ओडिशा राज्य छात्र संघर राज्य सभापति एवं निखिल भारत छात्र संघर उपसभापति भाव में निर्वाचित होते। दीर्घ समय धरी विभिन्न श्रमिक संगठन सहित निजक ओतप्रोत भाव जड़ित कर एक भिन्न परिचय सृष्टि करथिबा श्रीयुक्त घड़ई महोदय बहुबार ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होगा सरकार विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्री भाव में कार्यनिर्वाह करछन्ति। तृणमूल स्तर लोक सहित जड़ित जड़े दक्ष अनुभवी बाग्मी निश्चयभाषी राजनीतिज्ञ भाव में से परिचित। आमे एभली जड़े व्यक्ति को सभापति पद पाई कृतज्ञ। सामिल होइतिबा हरिश्चंद्र बक्सपत्र शुभेच्छु साथी सहकर्मी अनुगामी गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं तांको भल पाउथिबा उपस्थित समस्त सज्जन मंडली को मु स्वागत करछि। उत्कल क्रांतिर संग्रामी संतान सामाजिक न्याय आंदोलन अन्यतम प्रवक्ता विशिष्ट राजनीतिज्ञ स्वर्गत हरिश्चंद्र बक्सीपात्र जयंती अवसर आमे तांको भक्तियुत श्रद्धांजलि ज्ञापन करछु। तांकर गत 23 वर्षर अवर्तमान रे स्मृति रक्षा करबा पाई बहु सतीर्थ और अनुगामी स्मृति कमिटी रे शामिल होइछन्ति। दीर्घ 22 वर्ष धरि आजिर तारीख रे जननायक अंचल राज्य स्तरीय जन्म जयंती उत्सव पालित होइछ। जातीय स्तर रे विभिन्न क्षेत्र में सुनाम अर्जन करथिबा व्यक्ति विशेष माने प्रत्येक वर्ष आजिर समयोपयोगी विषय पर तांकर वक्तव्य रखिछन्ति। एहा सहित सामाजिकता और समाज सेवा क्षेत्र में 2 जन प्रतिष्ठित व्यक्ति को हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मारक सम्मान रे सम्मानित करा जाउछि। एही अवसर रे तांकर द्वारा 1965 मसीह प्रतिष्ठित पाक्षिक पत्रिका लोकनीति जहाँकि नियमित प्रकाश पाउछि तार एक विशेष संस्करण मध्ये लोकार्पित होइछि। 2021 मसीह कोरापुट ठारे तांकर एक पूर्णाकार प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक द्वारा अनावरण होइतिला। चलित वर्ष जयपुर ठारे सेठाकार पौरपालिका सहयोग एक उद्यान स्वर्गत बक्सीपात्र नाम होइछि एवं एक प्रतिमूर्ति स्थापन कार्य चालू अछि।
सेमानक पाखरे आमे कृतज्ञ। आज अनेक स्मृति से जीवित अगणित जन आंदोलन स्रष्टा आदिवासी अधिकार जागृत प्रहरी एवं ओडिया अस्मितार रक्षक से नेता आदर्श आगामी पीढ़ी अनुकरण यही कामना। पुणी थे आपण मान समस्त आज कार्यक्रम को अभिनंदन। नमस्कार। वंदे उत्कल जन। हरिश्चंद्र बक्सी पात्र स्मृति कमिटीर साधारण संपादिका डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सी पात्र को विशेष भाव में कृतज्ञता जनाइबु। हरिश्चंद्र बक्सी पात्र स्मृति कमिटीर प्रतिष्ठाता सभ्य जी जने नियारा सभ्य थिले अति ग्राम ठारू आरंभ करी चेतना को हरिश्चंद्र बक्सी पात्र मूल्यबोध को अंगीकार करी जे सब किछि को विशेष भाव में वितरण करुथिले एवं से आज आम गणना नहंती से अम्लान व्यक्तित्व अम्लान स्मृति रे आपण मान को निवेदन करिबो। गोटे मिनिट दंडायमान हुए से वरेण्य व्यक्तित्व उद्देश्य रे आपण माने आत्मार सद्गति पाई आपण माने प्रार्थना करिवे। अशोक दास उद्देश्य ओम शांति। प्रतिष्ठाता सभ्य अशोक दास अम्लान स्मृति रे आमे निरपेक्ष करबा परे अनुरोध करिबो। आज सम्माननीय अतिथि श्री संजीव चंद्र भट्टा महोदय को जने भारतीय प्रशासनिक सेवार वरिष्ठ अधिकारी भाव से जो भाव में निजक व्यक्त कर जने असमर्थ सारस्वत साधक भाव समस्त साहित्य अनुष्ठान कर निवेदन कर संबोधन पाई। वंदे उत्कल जननी। शुभ संध्या। ओडिशा महामान्य राज्यपाल माननीय श्री रघुवर दास महोदय, स्मृति कमिटी अध्यक्ष पूर्वतन मंत्री श्री प्रफुल्ल गड़े महोदय, आज मुख्य वक्ता महोदय, शुभेच्छु एवं शुभचिंतक तथा समर्थक श्रोतागण, आज मुझे गौरवान्वित अनुभव करुच्ची मंच में किसी कहवाई। 90तम जन्मवार्षिकी अवसर में मन पकड़ा बेले जीवन 3टी दिग अति क्षुद्र वक्तव्य कही से जड़े सालिसविहीन संग्रामी पुरुष थे। व्यक्तित्व 3टी दिग था। असंभव भाव से उत्कल प्रेमी ओडिया प्रेमी जो थे तीड़े मात्र कौन सालिसहीन। द्वितीय वामपंथी चिंताधारा जड़े श्रमिक कृषक एवं दलित जनतार स्वर थिले। तृतीय दिगटी से दलित श्रमिक मान भर सब बेसी निर्यातित जनजाति व आदिवासी संप्रदाय से मुख्य स्वर थे। प्रत्यक्ष नियंत्रण रे काम करने सौभाग्य अच्छी। परिवहन मंत्री थिला बेले मो परिवहन आयुक्त थे। कोरापुट थे पचारि सर आपंकर आदि बासभूमि है रायगड़ा, कर्मभूमि है जयपुर। कहले कोरापुटिया स्वर अधा सत कहल है बोले अधा कौन कहले जन्मभूमि है ओडिशा, कर्मभूमि है ओडिशा। बोले हाँ आज्ञा मुझे संशोधित कर आपको कहबी। मैंने हे तो केते जानी थे केते जानी नथिबे। आदिवासी कंध संप्रदायर भाषा को से एपरी भाव में आयत्त करते। कौन सी सभा समिति हठात कहीं कंध जनजाति लोक पाखक किसी आपत्ति अभियोग लेकिन आसूला सहित पूरा स्वच्छ कंध भाषा कथबार्ता होते सागर विभिन्न सभा कंध मान सहित कोई भाषा छड़ा अन्य कौन भाषा कथा कहते। मत कही कोरापुटर लोक कथा बुझाक आदिवासी मान आत्मा को शुणा मुझे पूर्व छात्रावास पूर्व मोर
जागरण पत्रिकार मोर गोटे कवितार गोटे पद शुणी भारी अभिभूत करथिला। अनाटने चापी हो जाए ए जातिर जाति प्राण मथा रही जाए दूरे बहु दूरे कुली आउ कृषकर कथा से खूब सुंदर लिखिते आजिकल लेखा लिखि पढ़ते ना प्रशासन जंजाल रही रखे से जनजाति सदासर्वदा उन्नति मन भितर केन्द्रीभूत होता अनेक चेतना अनेक भावना से जदि जीवे दक्षिण प्रांत कंधमाल पारलाखंडी गजपति अंचल से आदिवासी केते अवहेलित अछंती सेटा स्वचक्षुरे न देखिले करिवे नहीं। इंग्रेजी रे कहले तीनोटी कनेक्टिविटी तांको पाखरे न था। रोड कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, गवर्नेंस कनेक्टिविटी। प्रशासन रे केही समान दिल देखिया पैना जे कहिथिले आलोचना ए मान को पाखु को जाई पहुंचले जाई तांकर रक्तर उत्तापटा जानि पारिबो, छातीर स्पंदनटा जानि पारिबो, से जानि जाई तांकर अभाव असुविधा बुझी पारिबो। अभिभूत करथिला तांकर प्रथम तेणु से कहले आदिवासी बहुत अंचल अच्छा मानकर सहित प्रत्यक्ष संपर्क आसा कारण कोरापुट जी विभिन्न संप्रदायर जनजाति अच्छा अन्य कौन जिले में नथे। द्वितीय व्यक्तित्व तांकर है से प्रचंड ओडिया प्रेमी ओ दिगरु छात्र अवस्था तीनोटी प्रतिष्ठित महाविद्यालय छात्र संसद से सभापति पारलाखेमुंडी कृष्णचंद्र गजपति कॉलेज, रेभेन्सा महाविद्यालय एवं आईन मधुसूदन आईन महाविद्यालय छात्र संसद से सभापति। संग्रामी पुरुष हिसाब से सीमा आंदोलन सेपरी आंदोलन ओडिशा रे द्वितीय बार हेबा आम जीवन काल भितर आम देखी ना समग्र ओडिशा रे संबलपुर सुंदरगढ़ आरंभ कर दक्षिण पर्यंत विच्छिन्नांचल विशेषतः सढ़ईकला परसुआ उत्तर दक्षिण प्रांत में मंजूषा दड़ंतर इत्यादि जैसे विच्छिन्नांचल को एकत्रीकरण करने विरुद्ध में उत्कल सम्मिलनी एवं समग्र ओडिशा एकत्रित आगमन किपरि भाव में शेष पर्यंत उत्कल सम्मिलनी विच्छिन्नांचल दिने आप संध्या बेले बाहर भुवनेश्वर जयपुर पहुंचती सारा राति रास्ता आप गाड़ी में जाऊँच केमती कटाऊँ से कहले 4टी संगीत रेकर्ड की रखी शुणी शुणी जाऊे उपरा बोलाओ उत्कल संतान देवे कि दुई बेलू देश गौरव मधुसूदन दास तापर से कहले तुंग शिखरी चूड़ कुंज कानन माल यही गोटे प्रचंड ओडिया प्रेमी ठारू एपरी उत्तर मिली था से शादीहीन उत्कल प्रेमी निश्चित भाव विशाल उत्कल स्वप्न तृतीय व्यक्तित्व तृतीय दिगटी है चिंता नवरंगपुर देखा कर बहुत कहते विषय से कहले से कौन सी जिनस को कंप्रोमाइज करवा लोक नुहति आम राजनीति में विभिन्न दल हो पार किंतु वामपंथी चिंताधारा श्रमिक प्रति दरदी हृदय तेणु सब जीवन तृतीय व्यक्तित्व सबु समय जेकोसी समय यही तीनोटी जड़े प्रचंड ओडिया प्रेमी जड़े प्रचंड आदिवासी मानकर हृदय व्यथा बुझुवा जड़े संग्राम वामपंथी चिंताधारा प्रभावित श्रमिक एवं स्वर उपयुक्त मंच उपयुक्त समय उत्थापन करने
मेधावी पुरुष तांको समयर जो माने से समय साथी माने थिले अनेक चलीगले जो बयस अकाल निला मुझे अकाल कहीं आहरी सेपरी पुरुष ओडिशा माटी रे बहुत दिन रही जार प्रत्येक निश्वास प्रश्वास उत्कलता एवं आदिवासी श्रमिक कृषक प्रति उदार तथा उद्दाम नेता पाखे उदारपंथी हे उद्दामपंथी भाव एपरी जड़े महाशंकर यही पवित्र जन्मतिथि किसी कहबार सुजोग पाई पुनर्बार गौरवान्वित मन करी आपण विदाय नौ वंदे उत्कल जननी। सम्माननीय अतिथि माननीय श्रीयुत डॉक्टर संजीव चंद्र हरिश्चंद्र बक्सी पात्र को एवं से अनुभव अनुभूति आधार में श्रद्धार्पण जन अम्लान स्मृति नवेतम जयंती अवसर में आम ये आपण कही रखू प्रतिवर्ष पर चलित वर्ष ओडिया पाक्षिक पत्रिका लोकनीति जार प्रतिष्ठा थे हरिश्चंद्र बक्सी पात्र जी एवं तार एक स्वतंत्र संख्यार आनुष्ठानिक लोकार्पण हुए आज ए संध्यारे से कार्य निष्पादन करने आम मुख्य अतिथि महामान्य राज्यपाल सहित आम जार प्रतिष्ठाता थे पुण्यश्लोक हरिश्चंद्र बक्सी पात्र। लोकनीति पाक्षिक पत्रिकार लोकार्पण लोकार्पण करुँ सब वर्ष पर चलित वर्ष दुई जन व्यक्तित्व को आम हरिश्चंद्र पात्र स्मारक सम्मान में विभूषित करूँ वरण्य अतिथि द्वारा ये सम्मान प्रदान करेंगे महामान्य गरिमामय उपस्थित विभिन्न समय प्रजातंत्र समय विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिका आपण स्वाक्षर उत्कल प्रसंग मुख्य संपादक रूपे दीर्घ भूमिका विशेष भाव राज्य संवादित जीवनलेख स्तंभ साहित्य संगठक रूपे आप जीवन समर्पित एवं कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उपयुक्त भाव परंपरा को बजाय समर्पित कर गौरवान्वित अनन्य समाजसेवी को आम मंच को आमंत्रण करूँ। महाशय 5 पीढ़ी धरी पारंपरिक द्रव्य गुण औषध चिकित्सा करुवा परिवार चिकित्सा केवल करना औषधीय वृक्ष लता चाष प्रक्रिया समर्पित होती क्षेत्र में प्रति वर्ष अभिज्ञता कोरोना विशेष कार्यक्रम हरिश्चंद्र बक्सी पात्र स्मृति कमिटी संबर्धित स्वीकृति प्रदान विपुल अभिनंदन अनेक अनेक मंच पूर्ववत आसीन होगा निवेदन कर आज स्मारक की वक्तृता आम पाइछू
ದೇಶದ ವೈದೇಶಿಕ ಸಚಿವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೂಟನೀತಿಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರಂಗಿ is a leading Indian diplomat experience in serving the country as ambassador to the countries like Myanmar, Indonesia and Nepal, and the High Commissioner to Mauritius. As the Foreign Secretary of the country, he was instrumental in extending close relationship with so many countries of the world. As an avidly read man with a cosmopolitan approach to life, Sri Sharanji, orator and related issues. In recognition of his contribution to the civil service, he was awarded with the Padma Bhushan Samman by the Government of India. We deem it an honor, sir, to request you to present the Harishchandra Bakshipatra Memorial Lecture in this August contribution. Good evening. उड़ीसा प्रांत के राज्यपाल महामहिम श्री रघुनाथ दास जी, the President of the Bakshipatra Smriti Committee, Shri Chandra of the Government of Odisha, Sanjeev Chandra, former election of Odisha, and Dr. Ramundra, General Secretary of the Smriti Committee. At the outset, I would like to thank the Bakshipatra Foundation and its chairman, Shri Prabhu Bakshipatra, for inviting me to honor the memory of Shri Harishchandra Bakshipatra, a renowned son of Odisha and a revered social activist and political leader who devoted his life to the improvement and justice among the deprived and the country. Shri Bakshipatra was a man of many talents and said in whichever domain he chose to work in, whether it was in politics, in trade union activities, in journalism, and modern industry in his home state. He is justifiably celebrated and in his memory. I have chosen to speak on the current international situation and India's place in a rapidly shifting geopolitical landscape. Before I do that, of course, I must also recall that the state of Odisha has a long and very rich history of many the one country that has served as ambassador in, which is Indonesia. Even now they remember the Bali Yatra, which used to take place every year from the coast of Orissa all the way to the island of Bali. And there is even evidence that perhaps some of the people from Orissa even settled in Bali. And the textile tradition of Orissa and of Indonesia have very close affinity. So this is a state which has a very long history of relationship with our neighboring countries. Now, in terms of the current situation, as you probably are all aware that we are currently living in an extremely polarized political and ideological situation. And we have a war, for example, raging in Europe, which is in Ukraine, and now you also have a war in the Middle East. People are asking, are we already on the threshold of a new kind of Cold War? And hopefully that this will not, go and escalate into a wider. From 1947 to 1991, we lived through a binary world order.
dominated by two superpowers, the United States and the Soviet Union. They were locked in an across-the-board confrontation, political, ideological, economic, and military. They represented two very different visions of the world order and two opposing economic models. The Soviet Union was a one-party Marxist-Leninist state with a state-centered economy. The United States was a liberal democratic state with a private sector-led market economy. The center of their all-out rivalry at that time was Europe, with a US-led North Atlantic Treaty Organization, better known as NATO, on one side, and you had a Soviet-led Warsaw Pact military alliance on the other side. The two sides had minimal economic engagement and only limited people-to-people relations. As the two superpowers were also the two most powerful nuclear weapon states, there was always the danger that their confrontation may end in nuclear war, which would, in effect, mean the annihilation of humanity itself. The world came close to such a catastrophe during the Cuban Missile Crisis in 1962, when the two sides were locked into an impasse over the deployment of nuclear missiles by the Soviet Union in Cuba, just off the southern coast of the US. While the crisis was resolved through diplomacy, it led the US and the Soviet Union to engage in negotiations on nuclear arms control and on a series of confidence-building measures. Now, for countries like India, the Cold War confronted us with a very serious challenge. Having emerged as a sovereign, independent country after nearly 200 years of colonial rule, we did not want to subordinate our destiny to one or the other superpower. Being part of one or the other alliance would have meant a serious limitation on our sovereign decision making. We opted for strategic autonomy, which implies the ability to take relatively autonomous decisions on matters of vital interest to India. This was the essence of the policy of non-alignment, which was espoused by Pandit Nehru, India's first Prime Minister. This approach inspired many other countries emerging like India from years under colonial rule by the European imperial powers. These countries came together as the non-aligned movement, refusing to align either with the East or with the West, but maintaining friendly relations with both. During the Cold War, the non-aligned movement played an important and underappreciated role of constituting a zone of peace in an era of dangerous confrontation and as an influential voice advocating peace and disarmament. India's role as one of the leaders of the movement gave it an international profile beyond its objective economic and military. I wish to point out that though the end of the Cold War reduced the salience of the non-aligned movement, the basic principle of strategic autonomy that underlay India's non-aligned foreign policy remains the continuing bedrock of our contemporary external relations, though it may be labeled as multi-aligned, issue-based alignment or any other phrase. There is a remarkable continuity in India's foreign policy through domestic and economic transitions and geopolitical shifts. This has an important bearing on India's place in the changing world order. When the Cold War ended in 1991, the world came to be dominated by one single superpower, the United States of America. The collapse of the Soviet Union was seen as the terminal defeat of the Marxist-Leninist state and its socialist ideology. The idea of liberal democracy underpinned by free market economics appeared to have won the day. Political theorists like Francis Fukuyama saw this as the end of history, with no argument left against what became known as the Washington Consensus. Even a country like China, still ruled by a one-party state, but having embraced market economic principles, was expected to transition eventually
were gripped by a spirit of triumphalism, which, as we shall see, proved to be a shift. The unipolar world dominated by the US has already passed, and we are in the throes of a historic transition to a new world order. This new order is still in the making. Will it be bipolar order like during the Cold War, dominated by US and China as the new superpowers? Or are we likely to settle into a multipolar order, which may be a more loose structure with competing and sometimes collaborating middle powers like India, Brazil, Indonesia, or South Africa, among others? To understand India's likely trajectory, it is worthwhile on how India, for example, managed the end of the Cold War. Our current generation has very little idea of the multiple crises which India faced when the Cold War came to an end. An enduring anchor of India's foreign and security policy was its strategic partnership with the Soviet Union, forged in the 3 decades between 1960 and 1990. This partnership enabled India to deal with acutely adversarial relations with both Pakistan and China. India's industrialization was also supported by the Soviet Union, but this partnership evaporated virtually overnight in 1991. Together with this, India was facing an unprecedented economic and balance of payments crisis, having to mortgage its gold reserves to stave off a humiliating default. And yet, within just a couple of years, India had launched sweeping economic reforms and liberalization measures, established a more positive relationship with the US and Western Europe, and adopted what came to be known as the Look East policy, enhancing its relations with the dynamic Southeast and East Asian economies. This dramatic shift in India's foreign policy is reflected in the evolution of its relations, for example, with the ASEAN countries, the Association for Southeast Asian Nations. We began as only a sectoral dialogue partner, then we became a full dialogue partner, then a summit partner, and eventually a strategic partner in 2010, all within the space of 2 decades. With China, India developed its economic and trade relations even while negotiating a series of confidence-building measures to maintain peace and tranquility on the disputed India-China border. And it would be worthwhile to recall here that this peace and tranquility on the India-China border until recently survived for almost 40 years. It is only in recent times that this peace and tranquility has broken down. On several multilateral issues, such as multilateral trade and climate change, India and China collaborated with each other to advance their interests. I'm mentioning developments to underscore that democratic India has proved to be remarkably agile and capable of adjustment to a changing international environment, and this quality stands the country in good stead as it navigates once again a changing and challenging external environment. How has the external environment changed in recent years, and how is India dealing with this change? It is quite evident dominated by the US has passed, and perhaps passed irreversibly. One may count the unipolar phase as having lasted from 1991 to 2007-2008, when the global financial and economic crisis erupted at the very epicenter of the capitalist world in Wall Street itself. This crisis dealt a crippling blow to the credibility of the so-called Washington consensus that I spoke about earlier, and the after effects of the crisis are still rippling through the transatlantic economies, that is both the US as well as Western Europe. Even while the Western economies continue to suffer from stagnant growth and high fiscal deficits, and now resurgent inflation, China has emerged an alternate center of economic and military power. It is now the world's second largest economy, its largest trading power, and now a significant source of capital.
Until recently, its brand of state capitalism, combining market economics with an authoritarian quality, had presented a more attractive economic model to developing countries. Through a dense network of supply chains, linking the economies of East and Southeast Asia with its own dynamic economy, China has in effect created an Asian economic zone to rival the North American and the European Union. It is true that the Chinese economy has been slowing down of late with the collapse of its property sector and stagnation in its consumption economy. Unlike other countries which are grappling with inflation, China is threatened by deflation. Nevertheless, one should not write off China as some analysts are wont to do. Even with a lower growth of 3 to 4% per annum, China will be adding another India to its GDP, currently at $18 trillion. India's is about $3.6 trillion every couple of years. The China challenge is here to stay. The emergence of China as the world's second most powerful country has put it on a collision course with the world's hitherto preeminent power, the United States. The confrontation between the US and China is structural. The US wants to reach its place as the world's most powerful country. China believes it is entitled to equal status with the US and certainly a dominating position in Asia. The current reality may be described thus. The US remains the only military power with a global reach, with its network of military alliances and the excellence of its military technology. China is not yet in that league. Technology is one of the key drivers of development today. While China has made remarkable advances in a range of technologies, the US still retains an edge. The most consequential high-tech companies are all American: Microsoft, Meta, Google, Amazon, and Apple. Their collective turnover is over $6 trillion. But China is the manufacturing center of the world and its largest trader. In economic terms, therefore, we are in a more multipolar world. While it may seem that we are once again moving towards a new Cold War with a bipolar order, the geopolitical terrain today is much more varied and much more complex during the Cold War. You might have noticed that during the recent summit between President Biden and President Xi Jinping of China, both leaders said that they are not in a Cold War. So I hope we take some assurance from that. While the US and the Soviet Union did not have any significant economic and commercial relations, you will note that China and the US, in a sense, are joined at the hip. Despite a number of trade restrictions and sanctions, bilateral trade between the two countries hit a record figure last year of $690 billion US. A large number of US companies are invested in China, and this is estimated at a total figure of $3.6 trillion. It is this density of economic relationship which has led the US to describe its current policy towards China as one of de-risking rather than decoupling from China. However, as we have seen, the US and the then Soviet Union maintained multiple lines of communication after the Cuban Missile Crisis to prevent the war by accident or miscalculation. The US and China have only now begun the process of having similar confidence building measures. The risk of war between them is still quite high, mainly because of the Taiwan issue and China's aggressive posture in the Indo-Pacific. The recent CPAC summit may have led to progress in this respect. Now, India has leveraged its position as a major emerging economy and a significant military power to confront China's ambitions in Asia. I would like to say that India is the only country, by virtue of its size, population, economic and technological capabilities, that enjoys credibility as a countervailing power to China. This is the reason why it is quoted by the US
and the West in general, and is a member of the Quad, a grouping of the US, Japan, Australia and India, and anchored in the Indo-Pacific. India should use this leverage vis-à-vis the US and the West to build up its own economic and military capabilities so that over time it is able to compete with China on its own. Till then, it makes sense for India to engage in what we diplomats call external balancing, or working together with other major powers which have similar security concerns as we do with respect to China and other sources of threat. Which brings me to the last point, which is that we are talking about today the Global South, you must have heard, and I think the Global South Summit, which has been again convened by Prime Minister Modi. Now, people are saying that is the Global South is similar in spirit and influence as the non-aligned movement that we talked about in the Cold War years. Is India a possible leader of this Global South? The Global South is still not a coherent entity. It has not yet crystallized into a movement like the non-aligned movement. While the non-aligned movement was made up of relatively weak nations, seeking some influence through united actions, the Global South has several original powers which have greater agency than members of the non-aligned movement. They are to take relatively independent positions rather than follow the lead of the US or even China. It is not surprising that India and several other regional powers have refused to follow the lead of the West on the Ukraine war and more recently on the Israel-Hamas war. In that sense, the world seems to be moving towards multipolarity, and this suits India. It is natural for India to promote the concept of the Global South and emerge as one of its leading voices, as it indeed did during the recent G20 summit hosted in New Delhi in September this year. In a somewhat longer-term perspective, India has been remarkably successful in preserving and enhancing its strategic autonomy during its own transition into a major emerging economy and the fifth-ranking country in GDP terms in a changing geopolitical landscape. This has been the case through several political transitions in India, though each government has tried to project its policy as a departure and a more consequential departure than its predecessors. As long as India keeps to the principle of strategic autonomy as its guiding star, it should be able to chart out a successful trajectory towards the front ranks of the community of nations in the future. To that extent, Amrit Kal by 2047 is an achievable goal. I thank you for your attention. We are extremely thankful to Sam Saranji for his remarkable presence and inspiring words. यापर पर आमे आज ए कार्यक्रम रे सभापतित्व करुथिबा माननीय श्री प्रफुल्ल चंद्र खड़े महोदय पूर्वतन मंत्री जने स्थितप्रज्ञ राजनेता एवं हरिश्चंद्र बक्सी पात्रंकर सतीर्थ भाव रे जे तंकर कर्म विभाग को अति निकटरू लक्ष्य परिचंती एवं तंकर समाज प्रति रहथिबा दायबद्धतार प्रशंसा से सतमुख होई आछंती एवं स्मृति कमिटीर अध्यक्ष भाव रे तंकर उपस्थिति एवं तंकर मार्गदर्शन आम समस्त उत्साहित करिवो अनुरोध करिवो माननीय श्री प्रफुल्ल चंद्र खड़े महोदय को सभापति अभिव्यक्ति उपस्थापन पाए। आज जयंती उत्सव संध्यार मुख्य अतिथि होती महामहिम राज्यपाल माननीय रघुवर दास महोदय। आज मुख्य वक्ता अनेक दिगरू आलोकपात करगले आम आगे
वैदेशिक नीति कूटनीति विश्व अर्थनीति राजनीति कूटनीति भारत स्थान कौन कौन हवा उचित अनेक परामर्श देगले आम आज हरिचंद्र बक्सी पात्र सागर काम कर देखी संजीव बाबू विभिन्न दिग उपर आलोकपात करगले मंचरे जो मैंने आज अच्छा ये समावेश को सफल कर समस्त तुम स्वागत करी अभिनंदन करी माननीय राज्यपाल उपस्थिति मुख्य वक्ता वक्तव्य आज जो लक्ष्य जो उन्मेष नहीं कार्यक्रम आम करूँ सफल कर सर्वोपरि लोपामुद्रा जी संपादिका स्वागत करगले समस्त को धन्यवाद जन आपण मैंने जी हरिश्चंद्र बक्सी पात्र को भल पाती हरिश्चंद्र बक्सी पात्र इतिहास को जो मैंने भल पाती आप सदैव उपस्थित रही आज उत्सव को सफल कर सभापति हिसाब से आप समस्त धन्यवाद जनइबी कृतज्ञता जनइबी यही सहयोग यही समर्थन सबुदिन अपना रहू बोली आज आशा करी आम 90तम स्वर्गत यशस्वी नेता राजनेता हरिश्चंद्र बक्सी पात्र पालन करने उद्देश्य आम समस्ते प्रतिवर्ष कर वर्ष एकाठी हरिश्चंद्र बक्सी पात्र को पाखरे देखी पाखरे जानी पाखरे सांग ही काम करने सुजोग भी पाई मंत्री भाव में विधायक भाव में अनेक आंदोलन क्षेत्र में काम कर सुजोग पाई से थिले अद्वितीय दुर्धर्ष छात्र नेता जो सब छात्र संघ सभापति हो गले रतुषा कॉलेज मधुसूदन विद्यालय कोरापुट मोर सौभाग्य बहु वर्ष पर जोतार पाद पड़ार सुजोग मत मिलता बहु वर्ष छात्र संघ स्टूडेंट फेडरेशन सभापति बहु वर्ष धरी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भी थे उपसभापति आशीर्वाद कौन मत भी से पद मिलला बहुत वर्ष वामपंथी चिंता को उज्जीवित करने छात्र मान भीतर वामपंथी चिंता को करने सी अदम्य उद्यम करुले से उद्यम मत भी किसी दिन करने पड़ा छात्र मान एकाठी कर आंदोलन गढ़ी छिड़ा करदे चाषी को एकाठी कर आंदोलन छिड़ा करदे कृषक मान आंदोलन करवा षढ़ई कला पुरुष ऐतिहासिक आम नेतृत्व नवा सब मु देखा मनीष अनेक समय कथा हो बसिकी हरीश भाई तुम्हें तो निया जाणी दौच कथा कथा नक्सल सागर भी संपर्क करवा ओडिशा केते दिन पछर ओडिशा जदियो संपद भरा धनी राज्य प्राचुर्य भितर राज्य बंची ये प्राचुर्य भितर दारिद्रता केते दिन ओडिशा ओडिशा लोक केते दिन गरीब रही जो माने दलित जो माने पछर अछंती जोड़ी सुजोग पाइबा से सचेत महा पर्यंत तांकर भाग्य परिवर्तन आसीबा पाई कृषक आंदोलन करबा आदिवासी आंदोलन करबा लोक न जागिले छुआ न कांदिले माँ क्षीर दब ना महात्मा गांधी कथा से कहते महात्मा गांधी कहते समस्त आमको इंडिया लिव्स इन विलेजेस भारत एक ग्राम बहुल देश ग्रामर विकास नहेले भारतर विकास हम ना गाँ न हसिले देश हसब ना ये महात्मा गांधी उक्ति वार्ता से कथा अनुप्राणित होते हरिश्चंद्र बक्सी पात्र विधायक मंत्री बहुत सारे विभिन्न विभाग गुरुत्व विभाग से विधायक भारी दक्षता प्रतिपादन कर सब बड़े कही भल पाइबा ये जाति को भल पाइबा दलित लोक भल पाइबा
भाग्य परिवर्तन आनिबा ओडिशार विकास किपरि हेई पारिबो एई चिंतारे सबरे उद्विग्न रहुतले सी भाषा आंदोलन बेलू सबरी पहुंच जाउतले आप जानते ये भाषा भित्ति राज्य गठन करा जायछि ये भाषा न बंचिले देश बंचिबो नाही ये उक्तिरे मध्य से नेतृत्व नउतले सड़े कला कौशल अलगा रही गला ओडिशा रे मिसिला नाही ओडिया समस्त ओडिया जातिर प्राण को उद्विग्न करथिला सबुठ बेसे महान होउतले हम ओडिया भाषा को लोक रही पारे बंधु बांधव रही भाई बंधु रही मिसई पारिबा से समय जो नेतृत्व नउतले से राजनीति कहबुनी भारी विरोध करथुन पूरा आंदोलन करथुन 64 मसीहा छात्र आंदोलन आमे सब नेतृत्व नउथुलु पछरे हरीश भाई एटा करना कहीं सेटा करना कहीं से परामर्श करथुले एटा कहबा को चाहिए ए जगह मुता छात्र नेता हिसाब रे देखिछि तुसब नेता हिसाब देखिछि सड़ई कला खरसर आंदोलनकारी हिसाब रे देखिछि विधायक भाव रे मंत्री भाव रे तने देखिछि पाखरे काम सुझाव पाइछि ए बंधुगण आउ किछि दिन तक देश जाति आशा करथुला आउ किछि दिन बंची थाते ओडिशा राज्यर प्रगति पई अवदान दे जाई थाते मनुष्य इच्छा करे गोटे भगवान इच्छा अन्य प्रकार ए बंधुगण समय हम बेसी ने मान राज्य पड़िबो कि आज मु अधिक न कहे आमे तो हरीश भाई नाही तांको चिंताधारा तांको भावधारा कि जानिछन तांको सब रहिबे आमे एबे आमे देखु हरीश भाई के अनौछि देखु लोपामुद्रा को अनौछि भृगु को अनौछि ए दिन का जरिया हरीश भाई विधान इच्छा करती है और निकट है आप समस्त की धन्यवाद देवी अपन जब आसी हरीश भाई को केवल भल पाई नुहे हरीश पक्षीपात्र चिंताधारा जाति रे परिवर्तन आनिबा पाई ओडिशा विकास पाई पछरे पड़िथिबा लोकन पे काम करथबा चिंताधारा हरीश एई चिंताधारा को भल पाउथबा लोक अपन माने ये ओडिशा को आउरी उन्नत करिबा को हबो आउरी विकसित करिबा को हबो भारत वर्ष रे शीर्ष रे पहुंचेबा को हबो ये स्वप्न तांकर थिला आपण माने स्वप्न भागीदार माने एठी आसी चलती ए स्वप्न देखु थांतु हमको बड़ हबा को हबो हम आगु जीवा पड़िबो मो हरीश पक्षीपात्र आत्मा जोठी अछि भल रो ऊपर रही निजता आंदोलन करथले से आंदोलन तो आजिकल नहीं से विप्लव लिखि दिले पूर्व साइकिल विप्लव अन्य नाम हरिश्चंद्र पक्षीपात्र कथा कथा के निया जानी दबा विप्लव से युग तो नहीं तो परिवेश भी नहीं से विप्लव नहीं विप्लव तो मरे ना संग्राम तो मरे ना के संग्राम बंची रहे लक्ष्य मध्य आम बंची रुहती आम अस्मिता मत बजाय रहे आउ थे आपण सम्मति धन्यवाद दे आज संध्या अतिथि मान आउ कृतज्ञता रोची धन्यवाद नमस्कार वंदे उत्कल विप्लवर अग्निस्फुलिंग हरिश्चंद्र बक्षीपात्र अम्लान स्मृति श्रद्धार्पण कर स्मृति कमिटर वरेण्य सभापति स्थित प्रज्ञ राजनेता माननीय श्रीयुक्त अखिलेश चंद्र घड़ी महोदय निकट आम कृतज्ञता अर्पण करूँ आज मुख्य अतिथि ओडिशा महामान्य राज्यपाल छात्र साधारण जनजीवन समस्या को जड़ित रखी झारखंड प्रदेश लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाव कोटि कोटि हृदय सिंहासन में जी अभिषिक्त होते से आज ओडिशार महामान्य राज्यपाल अति साधारण जीवन आसी निज निष्ठा कर्म विभाग एवं सांगठनिक दक्षता सहित प्रतिबद्धता आधार में आज असाधारण स्तर को उत्तीर्ण हुई आम समस्त निजर घटना बहुल जीवन को नहीं जे प्रेरणार एक स्पंदित उत्स हो पारती से महामान्य राज्यपाल माननीय श्री रघुवर दास महोदय भव्य समावेश में निवेदन कर जय जगन्नाथ सुसंध्या स्वर्गीय हरिश्चंद्र बक्षीपात्र की 9वीं जयंती के अवसर पर देश में विराजमान उड़ीसा के पूर्व चुनाव आयुक्त श्री संजीव चंद्र मोता जी,
स्मृति समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री उड़ीसा सरकार श्री प्रफुल्ल चंद्र जड़ई जी, पूर्व विदेश सचिव एवं राजनयिक भारत सरकार श्री श्याम सरन जी, स्मृति समिति के सचिव डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सीपात जी, इस सभागार में बैठे सभी देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, हरिश्चंद्र बक्सी पात्र समिति द्वारा आयोजित स्वर्गीय हरिश्चंद्र बक्सी पत्रा 90तम जयंती समारोह अवसरे आपनु मन को समस्त मन को मोर हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय हरिश्चंद्र बक्सी पात्र जी को जिनकी 90वीं जयंती पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं स्मृति समिति का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महान स्नेह से इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हमारा विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी जीवन शाश्वत है। श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैना छिदंती सत्रान्नी नैना दहती पावका, अर्थात आत्मा शाश्वत है, यामर। इसलिए जो लोग समाज के लिए जीते हैं और मानव सेवा करते हैं, वे मृत्यु के बाद भी अमर होते हैं। उनके महान आत्माओं के अमर विचार आज भी हमें प्रेरणा देती है। हरिश्चंद्र बक्सीपात जी ने इसे आगे बढ़ाया। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सामाजिक न्याय के आदर्शों में जुड़े रहे। स्वर्गीय हरिश्चंद्र बक्सीपात जी ने अपना कैरियर एक आक्रामक छाप नेता के रूप में शुरू किया। बाद में वो तेलंगाना किसान विद्रोह में एक युवा कॉमरेड बन गए। कई ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े। दक्षिण उड़ीसा में रायता सभा का एक दुर्जन किसान मंच लॉन्च किया और बन गए 3 बार विधायक। कई प्रमुख विभागों का प्रभार संभालने वाले मंत्री भी बने। उन्होंने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी। राजनीति के मामले में ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी बक्सी बाबू की प्राथमिकता समाज और वंचित वर्ग ही थे। उन्होंने पूरे समय वंचित वर्गों, विशेषकर आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम किया और इन वर्गों में महत्वपूर्ण बदलाव है। वह अपने अंतिम श्वास तक मूलतः एक योद्धा थे। सार्वजनिक जीवन में उनके द्वारा स्थापित आदर्श उदाहरण का युवा पीढ़ी को अनुसरण करना चाहिए। समाज की सेवा के लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक न्याय की भावना को स्वीकार करें और अपनाएं। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्गों को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित ना रहे। दलितों, शोषितों, आदिवासी, महिलाओं और दिव्यांग के साथ साथ वंचित और शोषितों का भी सहारा सरकार ही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अंत्योदय की कल्पना को साकार कर लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अवसर मिले। इसी क्रम में पिछले दिनों 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें जनजाति आदिवासी के कल्याण 24,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक IEC वैन भी 22,000 गांव में, जहां जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो लोगों तक पहुंचे, हर गरीब तक पहुंचे, इस सोच के साथ आने वाले 25 जो वर्ष है
जब देश की आज़ादी हम 100 वर्ष मनाएंगे तो एक विकसित भारत हमारे समक्ष प्रस्तुत रहे। इसी को ध्यान में रखकर 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर विकसित भारत और संकल्प यात्रा की शुरुआत। बख्शी जी भी परिवर्तन के लिए शिक्षा को सर्वोपरि माना। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों में कई युवाओं के भविष्य को आकार दिया। नए भारत के लिए देश आज अधिकारों से बढ़कर कर्तव्यों की बात कर रहा है। जब कर्तव्य की भावना प्रबल होती है तो समाज स्वतः ही सशक्त हो जाता है। देश अब शिक्षा से सशक्तिकरण के मन से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आज बेटियों के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान इतने सफल हो रहे हैं। देश ने आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति के तरह मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गरीब परिवारों और गरीबों के बच्चे भी पीछे न रहें। सब आवास, सबको बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सबको साफ पानी जैसे प्रयास और योजना गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के सपने को बल तो दे रहे हैं, साथ ही देश में सामाजिक न्याय की जमीन भी मजबूत कर रही है। देश अमृतकाल के अगले 25 वर्ष सामाजिक न्याय के इन कल्याणों की पूर्ति सुनिश्चित करने का वर्ष है। मुझे विश्वास है कि हम सभी देश के इन अभियानों में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक बार मैं फिर स्वर्गीय हरिश्चंद्र बख्शी पात्र को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आप सबको पुनः धन्यवाद। जय वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। ओडिशा महामान्य राज्यपाल श्री रघुवर दास जी उपस्थिति एवं वक्तव्य माध्यम हरिश्चंद्र बख्शी पात्र प्रति से असपत्न जननेता प्रति जो भाव में श्रद्धार्पण करें कृतज्ञता अर्पण करुँ। ओडिशा महामान्य राज्यपाल महोदय सहित आज मंच मंडन कर स्मारक वक्तृता प्रदान कर प्राक्तन वैदेशिक सचिव विशिष्ट कूटनीतिज्ञ अनन्य माननीय श्री शरण जी कृतज्ञता अर्पण करुँ। रघुवर राम एवं श्याम आम निश्चित रूपे मंच परिपूर्ण एवं से राम एवं श्यामंकर करुणा को विस्तारित करुच्छे आज भव्य संध्या आम अध्यक्ष माननीय श्रीयुक्त प्रफुल्ल चंद्र खड़े महोदय निकट में कृतज्ञ आशीर्वाद को शुभेच्छा को पाथेय कर आम यही भाव में स्मारक वक्तृता सहित अन्य श्लोक हरिश्चंद्र बख्शी पात्र आज सम्माननीय अतिथि विशिष्ट प्रशासक एवं अनन्य सारस्वत साधक डॉक्टर संजीव चंद्र भट्टा महोदय उपस्थिति एवं आपणार अनुभव भितर जो भाव में से स्मरण कृतज्ञता एवं साधारण संपादक डॉक्टर लोपामुद्रा बख्शी पात्र आरंभ कर जो मैंने स्मृति कमिटी सभ्य एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु हरिश्चंद्र बख्शी पात्र प्रेमी से चेतना एवं अवबोधर अनुसरण कृतज्ञता अर्पण करुँ। विनम्र निवेदन कर दंडायमान पूर्वक जातीय संगीत उपस्थापन में सहयोग देवा। क्रमे सभा संग्रह घोषणा सहित महामान्य राज्यपाल महोदय निकट में समस्त अतिथि निकट में कृतज्ञता अर्पण कर
ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟ।